Hello, kids. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and safe at your home. Yes, kids. Today we are going to start with a new topic called subtraction. Chapter number 3. What is subtraction, kids? You must have studied in previous class 1, addition, subtraction. Yes? What is subtraction? Subtraction means to take away, or we can say to remove, or we can say how much left after giving. It means कोई चीज़ कुछ हमारे पास जैसे ग्रुप ऑफ थिंग्स है, हमने उसमें से कुछ ले लिया, टेक अवे, उसमें से हटा दिया, रिमूव कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमने कुछ किसी को दे दिया उसके बाद हमें क्या बचा, दैट इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. Subtraction means taking something away from number of things. When we subtract, kids, what is left is become less. हमेशा subtraction का result कम होता है. जैसे हमारे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और हमने किसी को 5 दे दी, तो हमारे पास कितनी बची? 10 - 5 is 5. हमेशा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कम में होता है. एंड इन लास्ट चैप्टर 2 यू मस्ट हैव स्टडीड एडिशन. हमेशा हमने जब ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट ज़्यादा होता है. 10 + 5 = 15 एंड 10 - 5 = 5. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन में हमेशा रिजल्ट कम आता है. इट बिकम्स लेस बिकॉज क्योंकि हम उसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर देते हैं, टेक अवे कर देते हैं, ले लेते हैं. ओके किड्स? So, today we will start with first example with balloons. We have 4 balloons, right? You can see in this picture, we have 4 balloons. 2 balloons flew up in the sky. Sky में उड़ गए, गलती से हमारे sky में उड़ गए. 1 and 2. Yes, kids? 2 flew up in the sky. So how much are left? Count with me, everyone. Kids, let us count. 1 and 2. So 4 में से 2 flew up हुए. How many are left? How many balloons? Yes. How many balloons left with me? 2 balloons. Yes, kids? Let us take another example of flowers. I have how many flowers? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5. Can you see? 5 flowers with me. And I have given 3 flowers to my teachers. 1, 2 and 3. 3 फ्लावर्स हमने किसको दे दिए? मैंने टीचर को दे दिए, अपनी 3 डिफरेंट टीचर्स को. सो हाउ मैनी फ्लावर्स आर लेफ्ट विद मी? हाउ मैनी फ्लावर्स लेफ्ट विद मी? टेल मी. 1 and 2. सो 5 - 3 = 2. हमने 5 में से 3 फ्लावर्स दे दिए टीचर्स को, तो हमारे पास कितने बचे? 2 फ्लावर्स. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. यस? Let's move to another example. Yes? Now kids, let us take another example of ice cream. Yeah, yummy ice cream. We have, how many ice creams we have? Kids, count with me. 1, 2,
3, 4, 5 and 6. How many? 6 ice creams. And I really want to eat it. Okay. I ate one ice cream. Very yummy ice cream. So kids, tell me, how many are left with me? Yes, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. So 6 आइसक्रीम्स में से 1 आइसक्रीम मैंने खा ली, तो कितनी बची? 5. How many are left? 5. Yes. Let's move to another example. That is, we have 3 toffees. Yes, we have 3 toffees. 1, 2, 3. Can you see, kids? 3 toffees. I ate one of the toffee. I ate one of the toffee. Yes, one of the toffee I have eaten. It's very yummy, chocolatey. So how many are left? 1, 2, 3 में से 1 मैंने ईट कर ली, तो कितनी हो गई? 1, 2. 3 minus 1 is equal to 2. Can you see, kids? 2. We can write, yes kids, there is a one more way of writing this. 3 minus 2 is equal to 2, or we can write 3 above, downside 1 and sign of minus, that is 2. Yes kids, we can write it like, let's take another example, 5 minus 5. Kids, we can do this examples with counting on fingers. Okay, open your palm. अपने fingers को open करिए, palm को. Have 5. 1, 2, 3, 4 and 5. अब 5 में से हमें कितने subtract करने हैं? 5 subtract करने हैं. तो हम उसको fold करेंगे अपनी fingers को. 1 finger fold, 2, 3 finger fold, 4 and 5. So, how many are left? How much? 0. Answer is 0. In the same way, next is 9 minus 5. So, open your 9 fingers. Take your both hands. Open, count. Open your fingers one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Open your 9 fingers only, okay? Now we are going to subtract, or we can say we are going to minus 5. अब हमें कितना subtract करना है? 5 subtract करना है. So let's start doing. Finger को down करते जाएंगे. 1 finger down, 2, 3, 4 and 5. हमने कितनी fingers down कर ली? 5 fingers. See how much are left? Standing fingers. 1, 2, 3 and 4. How many fingers? 4. And kids, you can see 9 को हम ऊपर लिखकर नीचे 5 and subtraction का sign symbol minus and answer is same 4. हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. 9 minus 5 is equal to 4 like this and on the left side, or on the right side 9 minus 5. Downside we can write 4. Meaning is same. You can write in both the ways. Is it clear to everyone? Next topic, number line. Yes? Kids, now you know about the number line. How to use number line for adding two numbers. You must have done in addition. Yes? Yes, kids? Kids, in this, what you are going to do is,
Okay kids, now you know about the number line, how to use number line for adding two numbers. Now let us see how to use number line for subtraction, like subtracting one number from another. Here we are trying to subtract. Look at the first picture, first number line. Here we are trying to subtract 7 from 9. हमें 9 में से फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 9 एंड सेकेंड इज 7. हम 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 9. यस, एंड वी विश टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9. वी विल मूव. व्हाट विल डू? वी विल मूव बैकवर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. इन एडिशन में हम क्या करते हैं, हमेशा आगे जंप करते हैं, हॉपिंग करते हैं, बट इन सब्ट्रैक्शन हम पीछे जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम रिमूव करते हैं, टेक अवे करते हैं, बाहर निकाल देते हैं कोई चीज़ को, अलग कर देते हैं कोई चीज़ को, कम करते हैं. तो जब हम कम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको बैकवर्ड जाना होता है. इज इट क्लियर? सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम 0 to we will go till 9. We will go till 9. And how much we are going to subtract? 7. So we will take 7 jumps, backward jumps, right? We'll start from 9, left by how many times? 7 times. Yes, let's start it. 1, 2, 3, and count 4, 5, 6 and 7 jumps. So 7 jumps कहाँ आके stop हुए? 2. 7 jumps कहाँ आके stop हुए? 2 पे. कहाँ पे stop हुए? 2 पर आके 7 jumps. Yes. So 9 minus 7 is 2. Answer is 2. Let us see next example. 12 minus 3. So what is the first number? That means here we are trying to subtract 3 from 12. Yes kids? So let us see at the first number, that is 12. We'll make hopping sign like from 0 to 12 and we'll put an arrow. And how many times we are going to hop? 3. Number is 3. We are going to subtract 3. So we will hop 3 times. 1. We'll start from 12. 1, 2 and 3. So हमारा हॉपिंग कहाँ रुका? 9. कहाँ रुका हमारा हॉपिंग? Yes, it will stuck on 9. So 12 minus 3 is equal to 9. I think, is it clear to everyone? Yes. सबसे पहले हमें नंबर लाइन में क्या देखना है? फर्स्ट नंबर क्या है? दैट इज सेकेंड. लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल 12. Straight away from 0 we'll go to 12th number. Yes. And how much we are going to subtract? 3 from 12. So how many times we will hop backwards? 1, 2 and 3. So answer is, yes, answer is 9. Okay, I think this topic is clear to you. You have done in addition also. We added, we moved forward in addition, but in subtraction we move backward, because we subtract, we minus, we remove, we take away numbers. Yes, group of things. टॉफ़ीज़ हैं तो हमने 10 टॉफ़ीज़ हैं, हमने 2 टॉफ़ीज़ ले ली. 5 बलून्स हैं, हमने 2 बलून्स ले लिए. हमारे पास 10 आइसक्रीम्स हैं, हमने 10 की 10 आइसक्रीम्स खा ली. तो लाइक हम कम कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कम करते जाते हैं, लेस. आई थिंक किड्स दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू.
number line and simple subtraction. Yes, kids? Yes? Okay. Revise it at home, and I'll give you one assignment to complete. Yes? Bye-bye.